मुंबई। मिल गया है नया घर, नए कपड़े, नए फ्रेंड्स और एक नया शो MTV पर, which comes out to you from their home unplugged and unwired. 11 o'clock ish. जल्दी बताओ, 11:30 on a good day. It starts off a little bubble. 10:30. It sounds like a little dog. गर्ल्स नाइट आउट प्लान करें, Expands into कितना मजा आएगा ना। पिज्जा खाते हैं। कौन सी आइटम गर्ल आ रही है आज? I don't know, सारू मायनी। सारू मायनी, अच्छा। यार मेरे को पता था अनमोल, ये MT वालों से कुछ नहीं होगा यार। इतने कैसे सेलिब्रिटीज को भेज रहे हैं यार, हमारा घर। इनके पास बजट नहीं होगा, इनके पास कुछ नहीं होगा, घिसे पिटे सेलिब्रिटीज को भेज रहे हैं। अब हमें एंटरटेन करना पड़ेगा। एंड प्लीज जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कोई भी आइटम गर्ल अपने आप को आइटम गर्ल नहीं कहती है। I तो know शी डोंट man। एक्सेप्ट इट। यार मैं तो इरिटेट हो उसको रही हूँ चढ़ा यार। देंगे हम ऊपर, ओके? या एक्स्ट्रा स्वीट। सारू मायनी क्या बातें करेंगे यार यार उसके देख साथ। लेंगे, विल जस्ट टेक अ केस, विल बी स्वीट। अच्छा लगता है, आ गई। Hi, how are you? Hi, nice to meet you. Hi. Saru. मैचिंग ड्रेस, मैचिंग आईलाइनर, ओ माय गॉड क्या हो गया इसको? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। That's so nice of you to call me here. And first of all, I want to tell you, I saw your latest song, and you are looking amazing. Looking amazing. You're looking so hot. You're looking so different. I know, I did Don't Smoke Sutta, and before that there was an Ishkua, and I went Okay. through a total makeover for this one because I felt showing. You lost weight. I lost weight and I toned up. I gymmed like majorly. I saw your posters in that pink outfit. Oh my God, your body is looking super. Amazing. Yeah. Amazing, yeah. I have the CD for you, in Oh, fact. okay, okay. Maybe I should give that to you so that you can remember me. Oh yeah, as- this that's is so the post sweet. I'm talking about. I saw. Very sweet. और हम लोग को जबरदस्ती CDs दे रही है कि देखो देखो सुनो सुनो, हमें नहीं सुनना यार। Who's interested? Very nice. Damn nice. अच्छा, एक बात बताओ, आपका ये जो सॉन्ग है बहुत कैची बीट है, बहुत पॉपुलर हुआ है, बट डिड यू एवर फील दैट इट माइट कम इनटू कैटेगरी ऑफ एन आइटम सॉन्ग? No, not at all. Actually, item song कहा जा सकता है because firstly, जो image उसमें दिखाई गई है, it's more like a pop diva. Yeah. ऊपर से लेके नीचे तक आइटम गर्ल लगती है। She's a complete item girl. It's like you're on the mic and you're singing. मेरी जो पहली videos थी Ishkua and Sutta Mix, उसमें I was like, people used to question, अच्छा आपने वो गाया भी है, because they thought I was a model. The whole brief was actually I cheated, and I think I'm very inspired by Kylie. तो उसके कारण मैंने उनको कहा था, you know, I want उसका 5% attitude भी आपने दिखा दिया तो my life will be नहीं, आपने made. तो बहुत एटीट्यूड दिखाया है, बिल्कुल। जो मैंने आपका वीडियो देखा है, वेरी नाइस, ऑब्वियसली काफी सीन्स है। एक तो ये डांसिंग अगेंस्ट द वॉल, एक ये हो गया, फिर कुछ बिलियर्ड टेबल, you know, वो तो- teeny mini shots पहना के। वही मैं आपसे पूछना चाहती थी, How did it feel? आपको कभी ये नहीं लगा कि यू नो, वैसे तो इट्स अ वेरी कैची बीट, आजकल हर क्लब में चल रहा है, पर आपको कभी ये नहीं लगा कि बिलियर्ड टेबल एंड ऑल कैन गेट अ लिटिल, यू नो? Again depends. I think firstly I'm not मैं इतनी big built नहीं हूँ that अच्छा। it could have looked. I'm more on the Yeah, you were looking petite very side. वो छोटे छोटे shots पहना के in front of 100 people, they it put me must up on a be. billiards table. I didn't get conscious इतना सा भी. Reason being Wow. that I knew I was fit. I didn't have an extra inch anywhere. Okay, I was toned up. तुम्हारे फिगर बिल्कुल टोन नहीं है, हड्डियां निकली हुई हैं। प्लीज मत बोलो कि आपका फिगर टोन्ड है। Okay. So Confidence. उससे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि I didn't feel conscious at all. I think 20 minutes I finished that whole thing. आई थिंक good, आप good. तो अभी सबको जो भी लेटेस्ट एल्बम निकाल रहा है, सबको कॉम्पिटिशन दे रहे हो complex- सबको कॉम्प्लेक्स देने I वाली think हैं। this time because क्या हुआ है कि पहले मेरे को लोग समझते थे कि एक मॉडल है, but this time because मैं माइक पे थी and that international look. See when I did Sutta Mix, तो क्या था कि I promoted one cause saying कि don't smoke Sutta because smoking is injurious even to passive बट smokers. हमने देखा था कि उसी पे लोग क्लब्स में सुट्टा पी के नाचते थे। नाचते थे पर मेरे को देख के सब जने अपनी सिगरेट छुपा लेते थे. तुमसे कौन डरेगा, तुम्हें तो लोग डरा देंगे। So my purpose was to spread an awareness. शेक इट की जो Global warming वर्डिंग्स से। है, वो मतलब व्हाट्स द कनेक्शन? I'll tell you. It was basically जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, it was a dance album. After that, when we started conceptualizing the video, तो मेरे जब पेपर खोलो उसमें global warming, and it was something which has always been affecting me. And I said, now how do in a dance album, how to connect, you know, how to bring this cause? मैंने कहा, why not in the video get an electric car in? By showing an electric car मेरे अपने वीडियो में, my message, my theme of my album is going to be let's go party with Shake It, Okay. but let's go the green way. They made a special Reva for me. If you've seen the car in the video, Yeah. it's a gold color convertible Reva.
अब इतना स्किन शो कर रहे हो गाने में, तो कार वार तो मिलेगी ना? अच्छा। And I enter the party in that car. The global warming problem automatically gets sorted out. I'm sure आपके कुछ तो बॉलीवुड के प्लान्स होंगे। बड़ी शॉकिंग बात हुई है कि मुझे फिल्म ऑफर्स तो तब भी आई थी जब इश्क हुआ किया था। अब मुझे पता है आपको किस टाइप के फिल्म ऑफर्स आते होंगे। Absolutely be great. Because my passion has always been singing. तो मैं उनके सामने पहले से कंडीशन लगा देती हूँ। I said do one thing. आप लोग मेरे गाने मेरे से गवाओगे, then I'm ready to read the script. Today it's a time for packages. हिमेश रेशमिया, फरहान अख्तर, they are all like multitask people, so it is possible. तभी इस बार मैंने अपनी एल्बम में 2 गानों के लिरिक्स भी लिख दिए, because I said if everybody can do everything, why not I? अगर अब ऐसे लोग ही फिल्म्स करने लग जाएं तो I pity film industry. आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप किसी को अपना लाइक आइडल मानती हैं, लाइक इसी पॉप सिंगर कैटेगरी में, लाइक Alicia Chinoy, Shibani Kashyap? I think more like Alicia from the past, and if today I would go to the west and say Kylie, because अभी हमारा I think you resemble her. Oh my God! I think you Listen, resemble Kylie can we stop the interview? I can't control anymore. I'm so excited. I love her. I'm telling you. I love her. मेरे झूठ को इतने सीरियसली ले लिया। मैं तो झूठी हूँ, मैं तो झूठ बोलती हूँ। किस एंगल से काली में लोग दिखते हो? लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, कौन सा एंगल? I think that kind of attitude. Yeah, Oh God, if you're saying I look like her. There's a lot of resemblance. Yeah, and now And we are also both of us same height, na? And you're She's not very lost. tall and I'm not very Yeah, tall. no, I'm telling you, perfect. Good Oh now my to God, resemble she Kylie. is Look the at best it. show on this earth. Can you do that shake it step for us? For And the, okay, all the yeah, audience. Okay, yeah. maybe I'll try to do it while sitting so that with my little expressions and all, Yeah. because you know when I was a child, Yeah. मैं कभी भी सीधा खड़े होके like मम्मी जैसे बोलती है ना, बेटा कुछ सुनाओ बेटा, whenever somebody would come home, I would run, bring a stool and stand on it and perform. So if you're telling me on this show, I have But to you teach us perform. also now. We teach us also. We all three of us will do it Okay, ठीक है. Let me start the song and then on the hook step you guys come in. Okay, fine. We'll And join then you. we copy. Okay. आज चांस है तू भी मेरे संग नच ले फुल रोमांस है, डांस है, बच सकता है तो बच ले दिल में क्या धूम मची है, सांसों में सरगम, धड़कन की ताल पे तू कदमों को थिरक ले, शेक इट मेरी जान, शेक इट shake. Hey, you guys gotta join in. Shake it मेरी जान, shake it. Okay, we stand in one place. Okay, lovely. It was very nice Thank talking to you so much. And did you like that house? I MTV has love given this to us? place. I love this color. This is the color of my outfit. I wish I'd worn those shorts and come I here. know. Then to this show मैं would have उसके been ऊपर a खड़ी होकर super परफॉर्म hit. करती। चाहे वो पिंक हॉट पैंट्स पहन के आती, चाहे वो कुछ भी ना पहनती, पर मैं उसको अपने टेबल पे डांस करने ना देती। चलो, thank you so so much. much. So nice for you All guys the to call very me. best. Bye bye. Bye. मैं बहुत ज़्यादा prepared थी. मुझे कहा गया था कि they can get a little bitchy with me, but I think उनको चांस ही नहीं मिला मेरे साथ, and they were damn sweet. I enjoyed talking to them. थोड़ा सा एक बार उन्होंने मुझे एक कॉर्नर में पुश करने की कोशिश की थी, जब उन्होंने कहा don't you think there's a very small line between an item girl and a pop singer, और मेरे गाने में ऐसा तो नहीं कि मैं item girl लग रही हूँ. I said no, so they were very helpful after that. I think, and when they danced with me, I think I just put them into my. मेरे को फेक लग सकते थे, but they were not fake because those are the compliments I've been hearing throughout, even from my own close people who can tell me what the hell they want. So it wasn't wrong. I mean, if they told me I'm looking sexy in the hoardings, it's true now. I am looking sexy. I've worked out towards it, and I don't think there was nothing wrong with what they were saying. They were absolutely fine, and I think they were truthful. They were quite honest and truthful. अगर देखो पता चले कि I was a lesbian, तो तू क्या करती? 11 o'clock. girls' night out plan करें? 11:30 on a